Dear students studying in class 10, welcome to BB Math class learning process. आमे जो विभाजन सूत्र प्रयोग करी स्थानांक ज्यामिति रे अनुशीलन 6b रो प्रश्न गुडी आमे आलोचना करिछि से अनुशीलन 6b रे नंबर 13 बहुत सुंदर प्रश्न डी अछि से प्रश्न डी आमे आलोचना करिबा ए नंबर 13 बहुत सुंदर प्रश्न डी अछि एडी दुईटी सूत्र रो व्यवहार होइछि एही परि प्रश्न गुडी प्राय बोर्ड परीक्षा रे आसे तेणु आमे एठी आलोचना करिबा एही प्रश्न रो उत्तर प्रश्न डी मो पढी दउछि त्रिभुज एबीसी रो भर केंद्र रो स्थानांक 1 1 ए बिंदु रो स्थानांक 3 -4 बी बिंदु रो स्थानांक -47 हेले सी बिंदु रो स्थानांक स्थिर करो पिला माने देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न दिए बहुत सुंदर प्रश्न दिए दुईटी सूत्र रो प्रयोग हो दुईटी सूत्र रो डिस्टेंस फार्मूला प्रयोग हो तत् सहित हमरो डिवीजन फार्मूला मध्ये प्रयोग हो तो प्रथम रे ए जो भर केंद्र शब्द रे व्यवहार हेछि ताको आमे बुझिबा भर केंद्र काहा को कहै जानिबा शॉर्ट क्वेश्चन आसे ज्यामिति रे भर केंद्र होछि त्रिभुजर मध्यमात्रयर छेद बिंदु को भर केंद्र कहै त्रिभुजर मध्यमात्रयर छेद बिंदु को भर केंद्र कहै एवं आमे आगरु मध्य ज्यामिति रे जानिछे जे मध्यमात्रय कौन सी त्रिभुज मध्यमात्रय एक बिंदुगामी उच्चतात्रय एक बिंदुगामी बाहुगुड़िकर समद्विखंडकत्रय एक बिंदुगामी कोणगुड़िकर समद्विखंडकत्रय एक बिंदुगामी तेरे से विषय आम आलोचना करिवार नाही कोड आलोचना करिबा केवल भर केंद्र विषय तेबे गोटे त्रिभुजटी प्रथम अंकन करिबा त्रिभुजर स्थानांक लिखिबा स्थानांक समकल नेबी नाही जे कोन से चित्रटी अंकन कर दे त्रिभुजटी अंकन करूछि मु एबीसी त्रिभुजर हमकु दुईटी बिंदुर स्थानांक दिया जाइछि ए बिंदुर स्थानांक बी बिंदुर स्थानांक दिया जाइछि ए बिंदुर स्थानांक होछि केते 3 -4 बी बिंदुर स्थानांक -47 एवं भर केंद्र रो स्थानांक अर्थात जदि ax एक मध्यमा होए by एक मध्यमा होए एवं cz एक मध्यमा होए तेबे एकी मध्यमात्रय परस्पर को गोटे बिंदु छेद करिवे एवं सदा सर्वदा समस्त चित्र रे भर केंद्र को जी नाम रे नामित करा जाय जी नाम रे काहे कि ना एटा होची सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी ट्रायंगल ग्रेविटी और त्रिभुजाकार क्षेत्र रे जे नेबा सेई भर केंद्र रे ही संतुलित होई थाए तेणु करिया को जी नाम रे नामित करा जाय ए जी बिंदुर स्थानांक दिया जाइछि जी बिंदुर स्थानांक 1 1 अछि बुझिबा पिला टिके आस्ते आस्ते हम जिबा हमकु ए बिंदुर स्थानांक दिया हैछि बी बिंदुर स्थानांक दिया हैछि जी बिंदुर स्थानांक दिया हैछि किंतु सी बिंदुर स्थानांक दिया जाई नाही
जेहेतु जी बिंदु त्रिभुजर भर केंद्र एक्स वाई जेड ये माने होचंती बाहु गुड़िकर मध्य बिंदु। कारण मध्यमा क्या कहा जाए जेकोसी त्रिभुजर गोटे बाहुर शीर्ष बिंदु विपरीत बाहुर मध्य बिंदु को जोग करथिबा रेखाखंड को कहा जाए मध्यमा। जब bx=cx हुए ताले ax हो मध्यमा। एठी हमकु जेहेतु cz एक मध्यमा by एक मध्यमा ax एक मध्यमा तेरे z बिंदुटी ab रो मध्य बिंदु अटे। ab रो मध्य बिंदु अटे। आमको प्रथमे z बिंदु स्थानांक निर्णय करने पड़ो। आम क्रमान्वय जीवा समय नष्ट करवा नहीं कारण ये दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। लिखा ये त्रिभुज एबीसी चित्र ये आवश्यक। एबीसी ए स्थानांक होउछि 3 - 4, बी स्थानांक -4 7 ओ भर केंद्र ये लिखिबा हमें भर केंद्र जी स्थानांक होउछि 1 1। प्रश्न अच्छी चित्र अंकन करिया चित्र मार्का अच्छी एडी मध्य मार्का अच्छी। जी बिंदु रे भर केंद्र होए तेबे एबी रो मध्य बिंदु जेड। त्रिभुज एबीसी रो एबी रो मध्य बिंदु जेड। एबी रो मध्य बिंदु जेड कारण मध्यमात्रय एक बिंदुगामी ax एक मध्यमा by एक मध्यमा cz एक मध्यमा। अतएव z बिंदुर स्थानांक समान x2 + x1 -4 + 3/2 y2 + y1 7 + -4/2 ये हम हमारा z बिंदु स्थानांक। एडी इक्वल टू एडी टाइप जो कले -1 हो -1/2 एडी टाइप जो कले 7 + -4 ये 3 हो 3/2। तेरे z बिंदु स्थानांक -1/2 एवं 3/2 एडी लिखि देबा। या स्थानांक होची केते -1/2 3/2 ये z बिंदुर स्थानांक। वर्तमान देखिबा cz सरल रेखा बा cz मध्यमा रे g बिंदुर स्थानांक दिया हिची z बिंदुर स्थानांक हमें पाई जाई छे किंतु c बिंदुर स्थानांक हमें जानि ना। सी बिंदुर स्थानांक हम जान नहीं जहाँ के हम प्रश्न में मागिछि सी बिंदुर स्थानांक स्थिर कर। तेबे आमे प्रथम रे ए जो भर केंद्रटी मध्यमा को क्यों बिंदु रे अंतर्विभाजित करे
ताकू जानिबाकू पड़िबो भर केन्द्रटी मध्यमानकू केउ अनुपात रे अंतर्विभाजित करे ताहा जानिबाकू प्रत्येक त्रिभुज रे भर केन्द्रटी प्रत्येक मध्यमानकू 2:1 अनुपात रे अंतर्विभाजित करे। अवश्य स्थूलकोणी त्रिभुज हम ना तेरे ये आम स्थूलकोणी त्रिभुज नहीं ना आम नहीं सूक्ष्मकोणी त्रिभुज आम लिखा ये त्रिभुजर त्रिभुज एबीसी भर केन्द्र जी एहा सीजेड मध्यमा को 2:1 अनुपात रे अंतर्विभाजित करुछि अर्थात CG is to GZ, CG is to GZ 2:1, CG is to GZ 2:1 या कहबार अर्थ CG टी दुई भाग एवं GZ गोटे भाग। जदि सी बिंदुर स्थानांक XY हुए आमे जानू जी बिंदुर स्थानांक इज इक्वल टू mx2 plus nx1 by m plus n my2 plus ny1 by m plus n এই सूत्र अनुसार आमे जी बिंदु स्थानांक पाइबा implies that हमको जी बिंदु स्थानांक दिया जायछि केते दिया जायछि 1 1 it is equal to mx2 आमे सी बिंदु स्थानांक xy लीछे mx2 m स्थान रे 1 m स्थान रे 2 हबो m is 2n ये m ये n m स्थान रे हम लेबा 2 x2 स्थान रे लेबा हमें -1/2 प्लस nx1 n रो मूल्य होछि केते 1 x1 स्थान रे होछि केते x बाय m plus n ये x स्थानांक हो गेला y स्थानांक टी हेबो my2 m रो मूल्य होछि 2 y2 3/2 अछि 3/2
प्लस ny1 n ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1 y1 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆମର y by m plus n। ये जो समीकरण मिली ताकू जदि आम समाधान करदेवा तेरे x और y रा मूल्य मिली implies that 1 1 is equal to लक्ष्य कर पिला माने ये 2 सहित कैंसिल हो ये गुणन होइछि हरण होइछि ये -1 हो गेला -1 प्लस 1 या मूल्य 1x by 3 80 मतलब 2 to कैंसिल हो जिवो 3 plus y एटी m plus n लिखिबा 2 plus 1 लिखिबा कारण m रो मूल्य 2 एवं n रो मूल्य 1 by 3 implies that 1 1 it is equal to बा ए लाइन नो लिखे तो चलिबो कारण ए लाइन हमरो मार्का नाही x स्थानांक सहित समान हो एवं y स्थानांक सहित समान हो -1 plus x by 3 it is equal to 1 ए x स्थानांक सहित समान हो ओ 3 plus y by 3 it is equal to 1 implies that ताको टिके सरल करिबा ये 3 1 सहित गुणन हो माइनस डाहन पट को जीवो x is equal to 3 into 1 3 plus 1 ओ ए 3 पट गुणन हो 3 जीवो ये जेके माइनस हो y is equal to 3 minus 3 implies that x is equal to 4 or y is equal to 0 अतएव हमें लीजिए c बिंदु स्थानांक xy अतएव c बिंदु स्थानांक केते हबो x स्थानांक होची 4 y स्थानांक होची 0 ये हमर उत्तर ये हमर संपूर्ण उत्तर ए घर केंद्र ऊपर अनेक गुड़े प्रश्न से अनुसरण अछि मो अनेक गुड़े दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर कर सारी सब नंबर उत्तर करने संभव नए वीडियो माध्यम रे अवशिष्ट नंबर गुड़िक पे निजे कर कौन नंबर जदि क्लिष्ट हुए बुझी हुए ना बा उत्तर आसब ना तेज कमेंट माध्यम जब जनइब मु निश्चित भाव वीडियो माध्यम तुमको उत्तर देवी जदि वीडियोटी को पसंद लगी था लाइक कर शेयर कर बंधु मान पाखक अन्य पिला माने निश्चित भाव उपकृत हेबे मोर परिश्रम से सफल हो। धन्यवाद।